visible on a screen. Yeah, we are going live. Good evening and hello to everyone joining us from anywhere in the world. This is Umashanker Yadav. Welcome to Exploring the Unexplored. Today I have a guest, Dr. Sadaf Fareed. She is an assistant professor in Aligarh Muslim University, teaches English there. She's an author. She is doing a lot of activities, has been connected with many government programs like Swayam and Arpit. She has been connected with the universities in Kingdom of Saudi Arabia, IGNU, Lucknow, as well as many other things. So, Dr. Shadab, you're welcome to the show. Thank you, sir. A It very is an warm. honor to have you because we are celebrating International Women's Day month. We call it March. So I would like to know, our audience would like to know, what are your views about uh, the status of women as on today? आप हिंदी में भी बात करिए तो हमारे दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा. Uh, हिंदी उर्दू मिक्स as as it is. Yes. हाँ, Urdu, Hindi, and English mix. Sub mix. Yes, yes. You Yes, can mix wherever you need. क्योंकि हमारे देश में नॉर्मली हम बातचीत में ऐसे ही जुबान का इस्तेमाल करते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. जैसे हमने हिंदुस्तानी का नाम दिया है, जहाँ हम उर्दू, हिंदी सब मिक्स कर देते हैं. हाँ, सब So, मिक्स करके. as I said that it's International Women's Day month. The month of March is going on. Yes. The issues and the problems that women are facing. It's it's something that is not very new. Women have been struggling since ages, and that struggle is in front of everyone. We all know that about the struggle. We all know about the history of this International Women's Day. We all know how women were denied so many rights. They were Even denied voting rights in certain countries. right to vote. They were denied equal pays. They were denied education. So they came forward to raise their voice. Still, the struggle is going on. Only the phase has changed. The intensity of issues has changed. So what do you think why it has been happening? अगर हम ये पूछे जानने की कोशिश करें, हमने पहले भी कई लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था सदियों से या जब से भी हो रहा था, लोग विमेन को कम करके क्यों आंक रहे थे जो आंक रहे थे, आखिर क्या कारण था उनके इंटेलेक्ट में या उनके फिजिकल स्ट्रेंथ में या फिर किसी दूसरे कारणों से उनको कम करके हर जगह क्यों आंका जा रहा था और अभी भी कहीं कहीं आंका जा रहा है? The biggest reason is patriarchy. आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं. Ours is a patriarchal society. अरे हुआ कैसे? कैसे पुरुष प्रधान बना कैसे ये? महिलाओं ने बनने क्यों दिया? नहीं, महिलाओं ने बनने क्यों दिया? अब अगर हम बहुत इसको आप बिगिनिंग ऑफ द वर्ड की तरफ भी ले जाएं, अगर हम इसको रिलीजियस वे में भी देखना शुरू करें, तो भी जैसे हमें बताया जाता है, जैसे हमने बचपन से ये पढ़ा, अपने मजहब में ये बताया गया, आपने भी अपने धर्म में ये देखा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा कि ईश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, फिर स्त्री की रचना हुई. तो पहले कौन आया? पुरुष आया. हमारी सोच क्या है, हमारा समाज क्या सोचता है, जो पहले आया वही तो सुपीरियर माना जाएगा. So when this feeling of superiority is attached to one of the creations, right. So that you is cannot say that persecuting. creator did it intentionally. No. In the And that eyes is of people, in the eyes of God, all his creations are important. He has created humans, he has created nature, even he has created small insects, and those insects are also important in his eyes. Right. इसलिए हमने मैं कहीं एक कोट पढ़ रहा था, एक उसमें यही बोला जाता रहा था कि nobody is going to give power to women, they have to take it, they have to snatch it rather. Yes, that's what had happened when those women came forward. They raised their voices. They were in a way snatching their rights. When they felt that
after requesting, they were not going to get anything. So the Hmm. only way was to revolt, Hmm. to struggle, to fight, to come forward and take it, whatever take what is there for them. क्योंकि सो आप जनरल स्टडीज पैट्रियार्कल, जैसे आपका सवाल था कि हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे समाज में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, और एक पुरुष प्रधान समाज में रहने वाली महिला की सोच भी कहीं ना कहीं पुरुषों की ही तरह हो जाती है। आप घर में देखते हैं कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स हैं, जो दादियां या नानियां हैं घरों की, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड सन से ज्यादा प्यार करती हैं। इट्स नॉट दैट कि they are not affectionate towards those granddaughters, but they are more affectionate towards those grandsons, क्योंकि राइट उनका दिमाग उस पैट्रियार्की के हिसाब से ढल चुका है। और आपको एक चीज जो नोटिसेबल है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ, दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम विमेन। इट्स अ वुमन there's something with from studying, uh, from yeah. education, from There's some issue with your audio. Uh, yeah, voice is international. cutting. I can hear you clearly. Is Yeah, my but voice fine there? now it is fine. In between, there was an audio issue. Now it is okay. So, Okay. Okay. so when it comes to the whole men versus woman, so Mm-hmm. hopefully men of every community, every country, every religion, every place, every class, every caste are almost similar, and women are similarly seeing that we whether they are highly educated or of higher class or of higher financial background or lower financial background, they feel the same. Do you think? No, I don't think so. The struggle for each and every woman coming from different social classes is is totally different. That Okay. struggle is not same for each and every woman. For Okay. example, a woman who comes from the lowest strata of the society, a woman who works in different houses as house help, or the term Hmm. that we use normally as a maid, Right. that woman would face somewhat a different kind of struggle. Uh, his issues sorry, her issues would be different, Hmm. but there is a level, and on that level the issues of a working woman, the issues of a homemaker, the issues of a woman from lowest class, the issues of a middle class woman, those issues become just the same for all. Right. And similarly, we can say that the issues for women coming from different communities, those issues are also sometimes different, and sometimes there are other situations when those issues are similar as well. So I just want to know one or two more things in this segment. Then we'll probably proceed to Mhm. some other topic. So one is I have been hearing women from particularly the developed countries. They also sometimes say it's a male's word, right? So, do you think things are changing now? People have started, men have started changing their attitude by listening to these kind of things. The plight of women, even those who are financially well-to-do, they also say that we are being facing, we face kind of discrimination. Like, okay, you have enough money, but still that kind of parity, equality.
you have money, you have everything, you are given everything, but again when it comes to equality or parity or decision making or stakeholding in the issues of the domestic or maybe financial or maybe a family relation, then again you are given less stakes, less authority to take the decisions. So these kind of things we have been hearing from all over the world. So, do you think? My question is: do you think things are coming closer now? People have, by looking into these kind of plights and the sensitivities of the women. Women have been voicing their concerns that we want equal say in family matters, in properties, in decision making. So, people have started change. Men have started changing. Do you think? I find a change. I find a positivity that men have started accommodating women in everything more. What is your view on this? To some extent, I would agree with you because here I must say that education is playing a very vital role. The educated men, there are many families where these educated men have started understanding issues of women, Right. and these men come forward to help women. In fact, there are men who stand with women, who raise their voices for the rights of women. But still, we have not won the battle against Hmm. disparity, against Right. discrimination. We have not won this battle. The battle is still on. And Right. as you said that in different countries, different areas, different regions are, I think you also mentioned that different social systems, the struggle could be different from one place to other, from one system to other. Yes, this struggle Yeah. has many faces. It's But not a men, one face, yeah, one type of a fight. This fight has at every level. It many is at faces. every level. Yeah. Nation is everywhere, but Yes, the yes. face is always different. I would give you, I'm sorry, I'm cutting you in Yeah. between. I would give you example of communities. Let's say that in our social system in India, there are so many communities in India, Right. and the struggle for equality is there in every community. Hmm. Women from every community are struggling for certain rights. Right. Let's take the example of my own community, a Muslim woman. She also struggles for equality and equity, just like Right. a woman from any other community in our society. Right. These Muslim women, they also call for equal rights, like right to education, right to property. In fact, in the present time, many changes have occurred, but still, Yeah. there are so many things that they have not achieved. I would give you a very specific example. Let's take the example of right to property. Yes. Property rights in Muslim families. Islam has given right to property. Islam Right. has given Muslim women this right. Islam allows women to have property. Hmm. Yet there are many families in our society that deny this right to their girls. Hmm. And it's Hmm. not only in the poor families, but Hmm. this problem is there in the well off families as well. Right. You're They right. are doing such things. Why? Hmm. Why are they doing such things? Hmm. One thing, But I think sometimes this is, they are yeah. doing intentionally, which is Hmm. because of patriarchal system. Hmm. Preference is always given to boys. The second Right. thing is lack of information. So I Yes. You're feel right. that the most important thing that we can do in the present time for our girls, for our women, is to educate and inform them. Hmm. Education make them strong. Information, correct information, can make Hmm. them strong enough to stand for themselves. Right. And financial independence. Yes, Hmm. financial independence, because education is the foundation. To get the financial independence. You're right. Yes, for everything. तो ये आपका जो दूसरा आपका दैट एकेडमिक स्ट्रेंथ है जिस पे आप काम करती हैं ज़्यादा,
आपने दलित लिटरेचर पे काम किया है, देन जी, दिस डायस्पोरा लिटरेचर पे भी काम किया हुआ है, ट्रांसलेशन पे काम किया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं जिन पे आप काम करती हैं, क्योंकि मुझे भी ये बड़े इंटरेस्टिंग लगे। जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे ये सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, तो मुझे लगा कि इनमें बात करना लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दलित लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें महिलाएं कितना आगे हैं? अगर महिलाओं का सेशन है तो महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो जी, आपको, क्योंकि आपने उसमें रिसर्च किया है, आप पढ़ाती हैं और उसमें जी, जी। आपने बहुत सारी पढ़ाई की, तो आपको मिलती हैं महिलाएं दलित लिटरेचर में अच्छी महिला, अच्छा जी, बिल्कुल, अच्छी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जी। बहुत अच्छी-अच्छी फीमेल राइटर्स हैं हमारी दलित ओके। लिटरेचर की। As we all know that Dalit literature came as a revolt to the हम्म। age-old caste system. हम्म। And Dalit writers, they started writing in the form of narration. They started हम्म। narrating their own stories of trauma, their राइट। stories of suffering, their stories of struggle. हम्म। So those were their own stories. I said Dalit writers. When I say Dalit writers, this is Dalit male writers. हाँ। Again, a man comes first. Male हाँ। writers, they started writing stories of their trauma. So, हम्म। as a literary trend in India, it began through Indian regional languages and then through translation. हम्म। It is a literature which is known for self assertion and self narratives, हम्म। which changed the established mainstream literary and critical conventions. हम्म। But then, after some time, and at this stage, in the present time, or we can say in recent trends, Dalit writings show that more women have started writing. More ओके। Dalit women are taking to writing, अच्छा, since many of them are now getting educated. मैं एक Now, the difference, ये, sir, let me finish this जी thing. जी प्लीज, यस। Just one more sentence, because जी। that is the most important thing. The difference between the writings of Dalit men and Dalit women. हम्म। The major difference is that uh, Dalit women are not only focusing on their plights as Dalits, हम्म। they are also focusing on their problems, their suppression as women. हम्म। In this regard, they are not only highlighting that age old caste system, but they हम्म। are also focusing on the behavior of Dalit males हम्म। who tend to treat them unequally. हाँ, मैं They आपसे जब, also यस, subject them to physical violence and domestic abuse. या जब हम This इससे is पहले थोड़ी बात कर रहे social. थे, जा जब हम बात कर रहे थे तो मतलब हर स्ट्रेटा की जो महिला है और जो पुरुष हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं तो है ही। वो हर स्ट्रेटा के, चाहे वो जिस लोअर है चाहे अपर है, फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई हमें कि उनका स्ट्रगल यहाँ से भी है, वहां से डबल स्ट्रगल हो जाता है इनके साथ डबल दलित, स्ट्रगल है। फिर ये इसीलिए डबल। हम कहते हैं, जब हम दलित लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, तो हाँ। हम जब दलित महिलाओं की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, तो एक मेन चीज पर जिसपे हम फोकस करते हैं, हम कहते हैं दे आर डबली मार्जिनलाइज्ड. यस। They were marginalized एज as ए वुमन, Dalits, एज ए दलित। and यस। then they were marginalized as women. हम्म। Their problems are double. डबल प्रॉब्लम्स, यस। तो Yes. मैं ये बात कर रहा था कि एक कहीं कोट पढ़ रहा था अभी, अचानक मुझे याद आया वो कि वीमेन विद वॉइस आर इन स्ट्रॉन्गर इन इटसेल्फ। those who have voice, those who can talk about themselves, talk about the issues, talk about the things as you are talking, they are stronger in themselves, they can talk about themselves, they can express themselves. Correct. तो ये अगर हम लिटरेचर की बात करें, क्योंकि हम दलित लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो ये जो लिटरेचर होता है, चाहे दलित लिटरेचर हो या कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो साहित्य में जो एक्सप्रेशन वाला आइडिया है, जो लिखने का है, आप लिख देते हो कोई बात को, चाहे अपना अपनी, चाहे समाज की बात हो, चाहे अपनी बात हो, चाहे अपनी इमोशंस हो, तो वो अपने आप में आपको एक संतुष्ट बना देता है, और दूसरे लोगों को आपकी समस्या को पढ़ के, हो सकता है उसमें कंपैशन आए, हो सकता है आपको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आए। तो जो ये दलित लिटरेचर की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिन लोगों ने लिखा है, उससे समाज पे काफी कुछ फर्क पड़ा है। उनको एक एक वो मिला है, अपलिफ्टमेंट मिला है, लिटरेचर से अपलिफ्टमेंट में मदद मिली है। मैं ये जानना चाहता था। अपलिफ्टमेंट तो हुआ है सर, ओके। लेकिन अभी भी
जिसे हम कहते हैं कि हम पूरी तरह से उस एक स्पेसिफिक स्टेज तक पहुंच सकें, वो नहीं हुआ है। हाँ, मतलब ज़्यादा मेजर मेजर नहीं कर सकते अभी, लेकिन फ़र्क पड़ हाँ, रहा है। मेजर नहीं कर सकते बट कुछ फर्क पड़ा है, बट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज देयर। आप जब हम दलित लिटरेचर पढ़ते हैं, एज यू सेड दैट इट कुड क्रिएट कंपैशन, यस, लिटरेचर वर्क्स इन टू वेज। इट क्रिएट्स रियलाइजेशन, people come to know about certain things, about certain trends, about certain issues and problems, हुँ, and then compassion. हुँ, People start relating to that specific thing. हुँ, If any trend is going on and you create literature about that, when someone reads, the reader would start relating to it. हुँ, राइट। When a reader reads about the issues of an author, about the problems, हुँ, as the most important thing about Dalit writings is that most of the Dalit writings are in the form of autobiography. Their हुँ, novels are autobiographical novels. In हुँ। those novels, देर they narrate their own stories in the form अपनी of व्यथा, अपने जीवन की कहानी, अपनी व्यथा बताना अपनी ही बात वो उसमें बताते हैं नॉवेल के रूप में। तो हुँ, वहां पर एक रीडर रिलेट करना शुरू करता है, हुँ, और फिर जब वो उस प्रॉब्लम की, उस सफरिंग की इंटेंसिटी देखता है, हुँ, सफरिंग वॉज, राइट। वो कंप्लीट होता है। तो यही लिखना तो इसीलिए बहुत जरूरी है। और ये एक वॉइस देता है, आपको एक जुबान देता है जिससे आप अपने आप को हमें ऐसा लगता है कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग फील करते हैं अपने आप को। एट लीस्ट आई एम एक्सप्रेसिंग व्हेदर इट मेक्स अ डिफरेंस इन द लाइव्स और नॉट, बट एट लीस्ट यू हैव सेड योर थिंग, आपने अपनी बात कह दी। ये भी यस, यू आपको हैव स्ट्रॉन्ग सेड बनाता है। योर, यस। you have अब let others have a peep in your inner self, तो हमें ये how बताना है, मैसेज देना है कि हर how पर्टिकुलरली brave वी you टॉक are. अबाउट दलित लिटरेचर। या तो अगर हम दलित लिटरेचर की बात करें जिसमें कि आप रिसर्च करती हैं, जिस जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आप पढ़ाती भी हैं, तो हमें ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए कि आप लिखिए अपनी बातों को। सब लोगों को लिखना चाहिए, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, यंग लोगों को। तो बिल्कुल। हो सकता है ये जो सामाजिक असमानता है उसको कम करने में बड़ी मदद मिलेगा और एक आप अपने आप में स्ट्रांग फील करना शुरू करेंगे। एक एक पर्सन विद वर्ड्स करना शुरू करेंगे। हम आपके दूसरे इंटरेस्टिंग वर्क की बात करेंगे। ट्रांसलेशन का भी आजकल ज़माना चल रहा है और हमने देखा कि ट्रांसलेशन में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाते हैं और आपने ट्रांसलेशन किया हुआ है उर्दू को जी, इंग्लिश में, हिंदी को भी अभी उर्दू में कर रही हैं। तो ये कितना आसान होता है और आप कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि आपकी जो आपने सदत हसन मंटो जी की भी कहानियों को, शॉर्ट स्टोरीज को ट्रांसलेट किया है, तो वो एसेंस, वो इमोशंस रह जाते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि रीडर्स को लगे कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं? यही वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपने कहा कि वो एसेंस रह जाता है या नहीं। ट्रांसलेशन करते वक़्त सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जो हमको अपैरेंटली बहुत छोटी, बहुत स्मॉल पॉइंट्स लगते हैं। पर जब किसी ने आप आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, किसी ने तो आपको कभी आपको, से कभी आपने आपको मैंने कई बार पढ़ा जो ओरिजिनल ऑथर्स थे, उन्होंने जी। ट्रांसलेटर को बोला कि नहीं आपने ये गड़बड़ कर दिया, मेरी मैं कुछ कहना जी, चाहता जी, था जी। और आपने कुछ और। हाँ। आपको किसी ने पॉइंट आउट किया इसके बारे में कभी? I must say that I'm still new in this field. I have translated a few stories of Sadat Hassan Manto. I have translated some essays by Ali Ahmed Surur. And हुँ, presently I'm working on a novel, हुँ, translating it from Urdu to English. And हुँ, अभी तक तो मैंने जो छोटा-मोटा काम किया है ट्रांसलेशन का, जो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि आपने बिल्कुल उसको तबाह करके रख दिया है। ऐसा बोलते और हैं कई बिल्कुल बार ना? अच्छा ही रहा। हाँ, ट्रांसलेशन में ये चीज़ें सुनने में आती हैं कि ट्रांसलेटर कुडन्ट डू जस्टिस विद द रियल वर्क, क्योंकि होता ही हुँ, क्या है जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर सेल्फ ओपिनियन, सेल्फ परसेप्शंस को किनारे कर देना है। हुँ, Because you are translating something which originally belongs to someone else.
उस हाँ, ओरिजिनल राइटर के क्या इमोशन थे उसको लिखते वक्त। पहली और चीज दोनों, ये हमें पूरे टाइम ध्यान में रखना होता है और वो कि जो इमोशन हम उस राइटिंग में ला रहे हैं वो उस राइटर के हैं, उस ओरिजिनल राइटर के इमोशंस हैं। इसमें दोनों भाषाओं की पारंगत पारंगत होना भी बहुत हाँ, जरूरी दोनों होता है। भाषाओं का आपको ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप ट्रांसलेशन करने बैठें और उस डिक्शनरी उठाएं कहीं-कहीं और पर ऐसा मोटे-मोटे होता है शब्द कि लिख कोई दें। मुहावरा हुँ, एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये कह सकते हैं कि कोई मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। हुँ, हम जब उस मुहावरे को ट्रांसलेट करने बैठते हैं या कहीं पर कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो एक कल्चर स्पेसिफिक है, हुँ, उस चीज को हम जब ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो उन टर्म्स को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात होती है। जी, बिल्कुल। आप उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उसको आप जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, आप उस पर आपको फोकस करना पड़ता है। आपकी जो दूसरा अभी जो लेटेस्ट पब्लिश हुई बुक, जो आपने आगा खान 3, सर सैयद मोहम्मद शाह के बारे में जो आप लिख रही हैं, लिखा आपने जो किताब को, वो क्या ऑटोबायोग्राफिकल है या उनकी मैंने बायोग्राफिकल है या फिर उनका इतिहास और कैसे शुरू हुआ उसके बारे में है? और Yes, कौन it's कौन it's a biographical. It's a biographical book, अच्छा, and it is about Sir Sultan Muhammad Shah, who is widely known as Aga Khan III. हुँ, और उनका जो He was शिक्षा the के later बारे में जो Imam of Ismail. He was the Imam of Ismaili Khoja community. हुँ, And in fact, this book is a tribute to him for his contribution towards the establishment of Aligarh Muslim University. हुँ, he was As also instrumental in doing it. Yes, as we know that Sir Syed Ahmad Khan had realized that the reason behind the deprived and underprivileged state of Muslims was their lack of education. हुँ, He had dreamt of establishing a university where हुँ, these deprived children of Indian society हुँ, could achieve world class education. हुँ। And but Sir Syed died in 1898. So So it can be a kind being of definitely. gained Bhushan with the help of his friends, with the Hmm, support of his friends and followers. And hmm, amongst those friends, there were many people who came forward to complete the dream of Sir Syed Ahmad Khan. For hmm, example, Sir Aga Khan III. Sir Aga Khan III was instrumental in that. hmm, Maulana Shibli, Altaf Hussain Hali, Mohsinul Mulk, and there are many other names. So, in this hmm, book, I have recorded Sir Aga Khan's efforts towards the establishment of Aligarh Muslim University. hmm. So thank you so much. We have come to the end of our first segment. We are going to start our second segment, where this is we call as a rapid fire round. You can give answers in one word or maybe one or two sentences. Yeah. These are just generally, first part is about general things. Second part is more of personal things, where we talk about the individual's personality, thought processes, beliefs, right? So what is the life of a working woman in India in one Challenging, word? Challenging at every but instant at the same time satisfying. You and see, rewarding. when you have to face a new challenge every day and you come back home victorious, it's quite And satisfying. you feel victorious. I just managed this, Yeah. and I just, yeah, that's Yes, good. yes, yes. These are the small things that Ah, make you feel victorious when you are a working woman, very and nice. And especially in Indian I like society. आई लाइक दिस द वे यू सेड कि आप चैलेंज लेके जाइए ऑफिस कि आज मुझे ये काम करना है और इसमें आप बाधाएं भी आने वाली हैं और लौट के अरे वाह क्या बात है हो गया। तो हाँ, वो एवरी डे छोटी यू कीप। वो ऐसा नहीं है कि आपको विक्ट्री हमेशा एक बहुत बड़े अचीवमेंट से फील हाँ होना हाँ, चाहिए। छोटी नहीं, छोटी बातों में ही हमें खुशी मिलना छोटी-छोटी है। चीज़ों यस से यस। आप विक्टोरियस फील कीजिए। आप अरे फील कीजिए कि बिल्कुल। आप जीत रहे हैं। वो छोटी-छोटी जीत ही आपको एक सैटिस्फैक्शन देती चली जाएँगी। मैंने तो कितने बार देखा कि लोग बाग अपने जो ड्रेसेज हैं, अपनी बातें हैं, अपने तरीकों में भी अगर कुछ नया करते हैं तो उनको एक चैलेंज लगता है कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर उससे भी आप खुश होकर आ जाते हैं तो देन अगेन देयर इज अ विक्ट्री। हम सब लोगों को इन छोटी छोटी चीजों में भी अपने आप को विक्टोरियस फील करना है और दैट इज हाउ लाइफ इज। बिल्कुल, जीवन यही है। वर्किंग वुमेन के लिए तो लाइफ एवरी डे इज अ चैलेंज एंड बिल्कुल। एवरी डे इज अ विक्ट्री। क्या बात है। यस, आई यस। लाइक द आंसर। वंडरफुल। आपके जीवन में अभी तक का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या था?
सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट, देयर आर सो मेनी मोमेंट्स। अगर एक आप कोई बता पाए तो अगर एक कहा अनफेयर जाए, होगा। it's like, I must say that, seeing my daughter growing up into a responsible human being. जब मैं हाँ, देखती हूँ मेरा बच्चा जो इतना छोटा सा था, अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वो सिर्फ हम्म, एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बन रहा है। अच्छा, उसे पता है कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए भी। वो ये बड़ा बहुत सेटिस्फाइंग लगता सेटिस्फाइंग है। देता है जब आपको लगता है कि हाँ, आपने जो चीज आप खुद करना चाह रहे हैं सोसाइटी को के लिए, जो आप देना चाह रहे हैं सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चों को भी सिखा दिया। हाँ, आपके आने वो वाले बहुत फ्यूचर सेटिस्फेक्शन, वो उससे जनरेशंस भी बहुत उसको कैरी संतोष फॉरवर्ड मिलता कर रहे हैं। और है। हाँ, सबसे बड़ा वही होता है कि हमारी जब फैमिलीज हमें जो हमारे जो नीचे आ रहे हैं, वो लोग अगर हमारी बातों को या हमारे विचारों को फॉलो करने लगे या आगे बढ़ाने लगे, तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बढ़िया बात है आपकी। बिल्कुल। अगर आप, क्योंकि हम ये वीमेंस डे मंथ है, तो अगर महिलाओं के केस में, हम सभी महिलाओं की बात करते हैं, किसी एक कम्युनिटी की हम्म, बात नहीं करते या किसी एक जी। रीजन की बात नहीं करते, चेंज करना चाहें तो क्या चेंज करना चाहेंगे? एक चीज अगर आपको लगता है कि इमीडिएटली चेंज होनी चाहिए। हम्म। एक चीज नहीं, मैं दो चीजें चेंज करना दो चाहूंगी, आप चीजें। थोड़ा सा मुझे जी, बिल्कुल, और। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली चीज तो, लाइक, 50% reservation for women in parliament seats and ओके, also in state legislature seats. ओके, This is the first thing that I would ओके। like to bring to the society. And the second thing, that is dependence. I wish डिपेंडेंट, every woman may become independent, especially इंडिपेंडेंट, ओके। financially independent, because हुँ, strength comes from independence. हुँ। तो मतलब हर महिला का अकाउंट होना चाहिए, बैंक हाँ, अकाउंट होना चाहिए, हाँ, एटीएम बिल्कुल कार्ड होना होना चाहिए। चाहिए, अपनी सैलरी भी होनी चाहिए। हाँ, और पर मंथ उनके अकाउंट में ज़रूरी पैसा नहीं आना कि चाहिए। आप, हाँ, उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए और उस पैसे पर उसका हक भी होना चाहिए हाँ, कि मतलब वो अपने हिसाब जैसे से चाहे निकाल सकें, अपने उसको हिसाब से यूज़ कर सकें चाहे उनको। उसको खर्च कर सके, जो चाहे वो चाहे वो हाउसवाइफ भी हो, लेकिन उनके चाहे वो अकाउंट में पैसा, हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, उनके लेकिन अकाउंट में पैसा उसको हर महीने सैलरी की तरह आना चाहिए और दे शुड हैव सिर्फ, फुल अथॉरिटी। हाँ, उसको उस पैसे पर अथॉरिटी भी होनी चाहिए। डिपेंडेंस सर, डिपेंडेंस, किसी के डिपेंडेंट ऊपर नहीं, पूछ-पूछ निर्भर के होना खर्चा नहीं करना होना बहुत चाहिए, बहुत बढ़िया। बुरी चीज़ है। हुँ, आत्मनिर्भरता एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने देश की सभी स्त्रियों के लिए चाहूँगी कि हमारे देश की हुँ, जितनी भी विमेन हैं, सब हुँ, आत्मनिर्भर हों। बिल्कुल। और फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता तो सबसे बड़ी हाँ, बात है। फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे क्या मात खा जाती है, हर काम के लिए पैसा माँगना पड़ता है कि ये भी छोटा-छोटा सामान के लिए भी पैसा माँगना छोटी-छोटी पड़ता है। चीज़ों के लिए आपको जब दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, वहीं डर रहता है कि पता नहीं मना ना कर दे कोई। तो हुँ, वो जब अब आप दूसरे पर जब निर्भर होते हैं ना, तो कहीं न हुँ, कहीं आपके दिल में एक डर सा बैठ जाता है। डर एक रहता है, पता नहीं इस बात को। खौफ रहता है, वो खौफ रहता है कि हुँ, हमें मना ना कर दिया जाए। कई बार तो हमने सुना है कि महिलाएँ बोलती हैं कि पानी पूरी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, पता नहीं कि पैसे माँगने पड़ेंगे। मतलब अभी तो नहीं रहेगी वो सिचुएशन, लेकिन ये हुआ करती थी पहले। हाँ, ये हुआ करती थी और अभी जैसे आप अभी कह भी रहे हो कहीं-कहीं बिल्कुल मिलेगी सही आपको। है, क्योंकि हुँ, हमारा सोशल सिस्टम है ना, वो डिफरेंट क्लासेस से मिल कर के बना हुआ है। तो हुँ, इस सही है। सोशल सिस्टम में अभी भी एक क्लास वो है, जो हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी, जिसमें लड़कियों को, औरतों को निर्भर होना पड़ रहा है पुरुषों पे। जी। तो थैंक यू उस सो मच, वजह से वेरी नाइस आंसर। यस, अभी आपके जीवन का सबसे टेस्टिंग चैलेंजिंग टाइम क्या था जहां आपको लगा कि हेल्पलेसनेस या किसी भी तरह हाँ। से, चाहे प्रोफेशनली पर्सनली, कहाँ पे आप ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस किए? Professional helplessness, thanks to God, all thanks to the Creator, all thanks to Him, that I have not yet experienced professional helplessness. हाँ, पर्सनल हेल्पलेसनेस मैंने फील की है, एक्सपीरियंस की है और बहुत बुरी तरह एक्सपीरियंस की है। दैट वाज द मोमेंट व्हेन माय फादर वाज ऑन वेंटिलेटर एंड आई कुड हम्म, नॉट डू एनीथिंग टू सेव हिम। हम्म, दैट these वाज are द मोमेंट ऑफ माय these are लाइफ। these are really sad moments. Yes. वो So, हेल्पलेसनेस आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो those I moments. just, every day I feel that, uh, I couldn't prove myself to be the best daughter because I could not save my father from dying. Hmm. That is the helplessness. We just move to the next question. Is you are a president of in your university, that is debating club and literary club. Mhm, So mhm. what do Yes. you think, what kind of discussions and debates and how youth are engaging themselves in literary and cultural activities?
in your So, college and general in your college in particular and generally in India, or maybe in the world, how people are taking literature and art and culture, young people, particularly the young okay, graduate. you have asked me two things, so I would answer separately. The first thing, as you said, that University Debating and Literary Club, it's basically Good. a club in our university, in Aligarh Muslim University, and I am the president of University Debating and Literary Club. It is Hmm. a club for all our students. Here, students come, they sit together, they discuss, they bring new ideas, and they execute their own ideas. They read, they debate, and they write all their creative thoughts, they Hmm. express. In fact, everything is managed by these students only. There are And senior you, students who guide them, there are hmm. juniors who are there who are eager to learn. This is Hmm. how our University Debating and Literary Club, which we call But UDL, there is an enthusiasm how in the our people, yeah, in the work. students. Yes, there is enthusiasm. And then you said that about the youth and literature. So, when we talk about overall literary scene, particularly among the youth, this literary scene among the youth could be more encouraging. Hmm. Presently, I don't find it very encouraging, but it could be. It can Hmm. improve. Hmm. And it can improve if the young writer Hmm. humanity. Right. So, जब हम हमारे इतना ज्यादा शुरू कर देते हैं उस hmm. समय हमारा तो तो अगर हम अगले सवाल की तरफ अपने चलें, तो डॉक्टर सदफ फरीद को हम 5 साल बाद क्या देखना चाहेंगे, कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, या 10 साल? 10 साल के आपके it's क्या a सपने typical question. हैं? A really typical question, and I find it difficult to answer. क्या कहूँ 5 साल बाद बट यू मस्ट बी आप थिंकिंग कह सकते समथिंग ना कि हैं 10 साल बाद much हम आप ये कह सकते हैं सदफ फरीद would be a much stronger woman after 5 years. मैं और स्ट्रांग हो जाऊं दिस इज शायद अब और हाँ, मैं बाकी तो ऊपर वाला समाज वो के लिए ज्यादा शायद बता हाँ समाज के लिए समाज शायद के और लिए ज़्यादा और उपयोगी हो जाए। समाज के लिए और कुछ अच्छा कर सकूं जी, बिल्कुल। उपयोगिता बढ़ जाए शायद मेरी हाँ, एंड हमें यही सब आई वुड ट्राई फॉर हमें दिस यही थिंग सब हमें यही सपने देखने चाहिए। ये नहीं कि हमारा मकान बड़ा हो जाएगा, हमारी कार बड़ी हो जाएगी, नहीं हमारा सर ओहदा मैं बड़ा आपको हो बताऊं जाएगा। मकान बड़ा हो जाएगा या ओहदा बड़ा हो जाएगा ऐसे सपने अब तक तो कम नहीं देखते हैं। देखे हुँ, अब तक तो नहीं देखे मैं आज भी एक किराए के ही मकान में रहती हूँ हुँ। लेकिन हाँ और मुझे लग समाज के लिए और हमारे समाज में जो बच्चे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से पैसे की वजह से या और किसी भी कारण से हाँ हुँ, उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी समय निकाल कर मैं कुछ उनको दे सकूं कुछ उन्हें पढ़ा सकूं बट ज्ञान आई से बड़ी कोई चीज शायद मेरे पास नहीं है उन्हें देने के लिए वही मैं उन्हें देने की कोशिश ये बहुत फुलफिलिंग होता होगा आपके लिए, बहुत ब्लिसफुल रहता होगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ओके, तो हमारा जो आपसे अगला सवाल है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम बातें करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। कई बार कुछ बातें होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि लोग बोलें, लोग सुने। आप क्या चाहते हो? हम सबसे करीब करीब ऐसे ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपके जीवन की कुछ चीज़ें हैं जो आप भी बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, और लोगों को उनसे बड़ी सीख मिलती है। आपने जैसे बताया कि हमें बड़ा मकान, बड़े ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है, होता रहेगा ऑर्गेनिकली, तो उसमें कोई दिक्कत भी होता नहीं है। रहेगा हाँ, वो हाँ होता रहेगा। होता रहेगा वो जब होना होगा अपने आप हो जब होना जाएगा है, होता ही रहेगा। अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल सोच रहे हैं, तो वो होता रहता है। उसमें कुछ ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। तो कुछ आप ऐसा सोचते हो कि जीवन में अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ होता तो अच्छा होता? कि आप ये नहीं करे होते, ये नहीं हुआ होता या आप नहीं किए होते, दोनों ही बातें हो सकती हैं उसमें। कोई एक चीज़, ये नहीं किया होता तो या ये नहीं हुआ आई होता, थिंक आप दोनों। देयर आर नो सच रिग्रेट्स इन माय लाइफ कि मैंने ये ना किया होता तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा हो जाता आई डोंट हैव एनी सच रिग्रेट्स और ना हुआ whatever होता। I do with my full heart
whatever I do, I just always keep in mind, and I just always keep in my heart my God. Allah is always there in my mind. So whatever I do, afterwards I don't get any kind of regrets. Huh. If you talk about circumstances, if you talk about fate, Hmm. uh, which plays with us all, Hmm. that is fate. So मैं Right. दोबारा से वही चीज कहूंगी, मेरे पिता की डेथ, वो नहीं हुआ होता my शायद ठीक से। father's death, which left ये me devastated and broken. आप अपने आप शायद को वो कैसे ना हुआ होता तो मैं और ज्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि इस टाइम मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, इस टाइम अगर मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर मैं ये कोई आर्टिकल लिखती हूँ जिसमें मैं ये बात करती हूँ कि ट्रिपल तलाक एक्चुअल में कुरान में कैसे बताया गया है, वो सारी हुँ, चीजें जब मैं बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सब मेरे फादर की पिताजी ही से देन, मेरे फादर पिताजी की ही देन है। जी, बिल्कुल। मेरे बहुत माता-पिता की ही वजह से मैं आज इस जगह पर हूँ। जी, तो बिल्कुल। उनकी कमी, फादर की कमी तो हमेशा ही रहेगी। तो ये जो समस्याएँ आती हैं, इनसे आप कभी आप किसी उलझन में फँस जाते हो, तो अपने आप को कैसे हाउ यू कीप योरसेल्फ पीसफुल? To get peace of mind, I pray. And to बिल्कुल। get solace from hardships of my life, I just talk to my family, especially I talk to my mother. हुँ, क्योंकि आज भी आप कितने भी बड़े हो जाएँ सर, लेकिन जब आप अपनी माँ से बात करते हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ, माय मदर इज़ हुँ, देयर हुँ, to help me. My mother हुँ, is there to take away all my problems. राइट वो एक एंड जो यू बिकम जो पीस मिलता है मुझे अपनी मम्मी से बात करके, जब भी मैं हुँ, परेशान होती हूँ तो मैं फ़ोन उठाकर उनसे बात करती हूँ। चाहे मैं अपनी परेशानी उन्हें नहीं बताती कि नहीं मेरी हुँ, लाइफ़ में ये हो रहा है, मैं काम में मैं इतना ज़्यादा थक रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स हैं ये, नहीं। हुँ, बट वो खुद समझ लेती हैं कि आज तुमको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, और उनसे बात करने के बाद आई जस्ट बिकम ये पीसफुल हम अगेन। सब लोगों को समझना चाहिए कि हमें हमें हमेशा बात करते रहना चाहिए लोगों से। जी। तो हमारी समस्याएँ वैसे ही अब चल मम्मी-पापा हैं वैसे तो काफ़ी चीज़ें वैसे ही फ्रेंड्स से भी सॉल्व बात हो कर जाती हैं जब आप सकते हैं, अपनों के साथ तुरंत शेयर करते हैं एंड दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू, तो आपके राइट, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिज़ॉल्व हो जाते हैं। राइट। और आज के टाइम में सर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, आज के टाइम में जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि डिप्रेशन रेट अमंगस्ट यूथ बहुत ज़्यादा है। इंक्रीजिंग, इट यस, इज़ यस। इंक्रीजिंग। हुँ। Those suicidal tendencies that they are getting. हाँ, क्योंकि वो So बातें नहीं करते हैं, बातें कम हो कहीं गई हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके हुँ, अंदर जो चल रहा है, उनके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो कुछ भी फ़ील कर रहे हैं, they do not talk about that. हुँ, They राइट। hesitate in sharing their issues with their own family. कहीं न कहीं आज के टाइम में हमने अपने युवाओं के इर्द-गिर्द जो माहौल है, वो आज के समय में ऐसा हो गया है, जहाँ हुँ, पर वो बात करने में झिझकते हैं, और इसलिए झिझकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हुए उन्हें शर्म आती है, हिचक हुँ, होती है, हुँ, हेसिटेशन अपनी प्रॉब्लम्स बयान करने में। हुँ। हमें ज़रूरत है कि हम उनके उसके लिए भी आगे आएँ और जी, उन्हें बिल्कुल। मौका दें कि वो हमसे बात करें, वो अपने बड़ों से हुँ, बात करें, हुँ। तो जिससे कि इसके ये साथ हम अपने कम कर सके। प्रोग्राम के एंड में आ रहे हैं। एक सवाल और बचा है जो मैं आपसे जानना चाहता जी। हूँ। मैं आपकी कहीं प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था आपके बारे में यू आर अ मेलोफ़ाइल, यू आर फोटोफ़ाइल एंड यू आर मर्क्यूरियल एंड लॉट मेनी. So I just want to know what about melophile? What kind of music you like and do you sing anything? What do you do with the music? You're a music lover. What do you do with the music? Can you yeah, please tell me. When you talk about singing, I believe in our India, in our nation, Hmm. everyone is a singer. We all Hmm. love music. Being Indian, Hmm. you have to love music. Hmm. Yes. You must be having this or that type of choice for music. Hmm. हाँ, मैं भी म्यूजिक मुझे भी बहुत पसंद है, एंड समटाइम्स आई प्ले गिटार एंड समटाइम्स Hmm. आई जस्ट तो आप कौन-सा गाना ज़्यादा गुनगुनाती हैं? ये तो आपने काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं कभी गाती कभी ऐसा रहती हूँ।
तो अगर आपको याद आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम फिर बातें करेंगे, क्योंकि हाँ, ये बातें। हम फिर बात कर सकते हैं इस पर। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वाज रियली प्लेजर वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और हमें दर्शकों को भी बहुत सीखने को मिलेगा। हमें ये जानना है, ये समझना है कि बातें करते रहना है, चाहे जैसी भी बातें हैं, बातें करते रहना है। बातें करने से क्या होता है कि हमें एक दूसरे, हमारा होराइजन बड़ा होता है, हम लोगों की सुनते भी हैं, और उससे हमारी सोच बड़ी होती है। हम छोटे इंसान नहीं रह जाते, हम बड़े इंसान हो जाते हैं अगर हम लोगों की बातें सुनते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, एक दूसरे के बारे में कंपेशनेट होते हैं, हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, तो हम बड़े इंसान हो जाते हैं। हमारा पर्पज भी यही है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड में, कि जो बातें लोगों के अंदर छुपी हुई हैं या जो उनका काम छुपा हुआ है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और दूसरे लोगों को अपनी बातें, आप जैसे लोगों को, डॉक्टर सदफ, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाएं। अगर हम इसके लिए कुछ भी मदद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, यही हमारा पर्पज होता है। और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि लोगों को, नए नए लोगों से और अच्छे लोगों से की बातें सुनने का मौका मिलता है। सभी दर्शकों का, जो भी जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे, बाद में देखेंगे, ये हमारा प्रोग्राम अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। लाइव प्रोग्राम चल रहा था हमारा, आप जब भी देखना चाहें देख सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर किसी न किसी व्यक्तित्व को लेके आएंगे, जिसमें हम उनके व्यक्तित्व और जीवन के बारे में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, डॉक्टर सदफ फरीद and everyone else who has been joining us and who will be joining us. You wish to say something? थैंक यू सो मच उमाशंकर जी। और ये एक बहुत अच्छी पहल की है आपने, इसमें आप बहुत दूर दूर दराज जगहों से आप राइटर्स को और आप लोगों को ला करके जोड़ रहे हैं। इट्स अ रियली कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग। जी थैंक यू सो थैंक यू। मच। फिर मिलते हैं।